5, you should do it like this. Okay, fine. ठीक है, आपने ये तो ठीक बनाया. नहीं, it's fine, it's fine. Okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Sorry. I thought there is some mistake in the Lewis dot structure. No, but everything is fine. Okay. Right now, one hybridization that is important. Please write DsP2 hybridization. Okay, this hybridization, please write first of all. Found majorly in compounds formed by D block elements. Formed by D block elements. Now the atomic orbitals will be, there will be a D orbital, there will be S orbital, and there will be 3 p orbitals, right? Sorry, 2 p orbitals. DsP2, sorry. There will be 2 p orbitals. That means the number of hybrid orbitals that will be formed, atomic orbitals that are getting mixed, is what? 4. So you will get 4 DsP2 orbitals. Okay. And here also the steric number is what? The steric number here is 4. In this, we are going to do an example of nickel CN whole for 2 negative. Please write, for example, nickel CN4 2 negative. Now the oxidation state of nickel is equal to, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा निकल का यहाँ पे, इट इज इक्वल टू x. ठीक है, अब इस x को फाइंड आउट करना है. ओके, x को फाइंड आउट करना है. वी हैव वन निकल x, Cn is in the form of Cn negative, that is why it will be 4 into, there are 4 Cns and each is having -1 charge. This will be equal to nickel and Cn as a whole, they have 2 negative charge, so I'll write 2 negative. I can find the x and this is equal to how much? This is equal to 4 will go here, it will be what? Minus, okay, this will be -4, it will go here, it will become +4, -2, that will be +2, right? The x will be equal to +2. Linear equation, one variable, you can find it out. Now this x is equal to what? This x is equal to +2. That means nickel is having atomic number 28, argon 4s2, 3d8. Okay, 4s2, 3d8. Now, but in this nickel CN4, we have nickel 2 plus. We don't have nickel, we have nickel 2 plus in the central atom. Now, this central metal ion, it will have the electronic configuration. Please see, there are 2 electrons will leave. Okay, 2 electrons are going to exit this nickel. Please tell me, will it exit from 4s or 3d? Where will it exit from? 4s or 3d? Send the answer in chat. क्या लगता है आपको? 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालिएगा निकल से तो कहां से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे या 3d से निकलेंगे? Okay, Ram, very good. Waiting for Devangi, Fahad, and Waziha. The 2 electrons, yeah, Devangi, very good. Waiting for Fahad and Waziha. It will be removed from the outermost shell. अब ये देखिए outermost shell कौन सा है? 4s या 3d, which is outermost? It will be removed from the outermost shell. Waziha, answer any one thing ना? क्या आपको लगता है? What do you think? Which is the outermost shell? Yes, correct, very good. So nickel 2 plus, it will be what? Argon. No, the electron will be removed from 4s, so we will be just having 3d8, the 3d8 electrons. Okay, 3d8 electrons. Now, in this case, what I can write the general electronic configuration such as
of nickel 2 plus. General electronic configuration will be, we have 3d8, one, two, three, four, 5, 6, 7, and 8. 6, 7, and 8. Okay. Now this is your 3D subshell. After 3D subshell, you will have one 4s subshell. This is going to be empty. Now, because see, please remember 4s is there. It is empty, but 4s is there. Now, if the fourth shell is there, there will be 4p also, which will be empty. Okay. Please remember, if you are having the fourth shell will contain the 4s also, the 4d also. All of these will be present. So I'm just writing that here. This 4p is present here. This is also what? This is also vacant. This is my 4p. This is my 4p. And also please remember the Cn. The Cn is coming with what? The Cn is coming with its negative charge. Cn is what? Cn negative. Now, if Cn is Cn negative, then it will be bringing its own electron. Okay. That means it will be forming a coordinate bond with nickel 2 plus. Okay. It will be forming coordinate bond with nickel 2 plus. इस तरह से bonding होगी. That means the nickel needs 4 orbitals vacant. Please see. To form coordinate bond with Cn negative, nickel should have 4 vacant orbitals. It should have 4 vacant orbitals. Okay. Now, in order to do this, what happens? This electron, it shifts here. And the excited states look like this. There is 4s. And here is the 4p. Okay. So this is your D, this is your S, and this is the P subshell. Now all of these three, they will get hybridized. And the hybrid orbitals will look something like this. All of these will be what? Vacant. There will be 4 orbitals. All of these are going to be vacant. Okay. And then each of the Cn negative with its paired shell, it is going to overlap with the hybrid orbital of nickel 2 plus. Okay. All of these belongs to what? Cn negative. Okay. And they are going to share both the electrons. They're going to share both the electrons. Okay. Now, because of this d subshell, what happens? Because of this d subshell, what happens? The hybrid orbital that we get, they arrange themselves in a square planar manner. Okay. So this is how they are going to arrange themselves. This is how they are going to arrange themselves. This is nickel 2 plus. Okay. Now, if I want to make the bonds, it will look something like this. Nickel having a bond with 4 CNs. Okay. And this as a whole has 2 negative charge. The electronic geometry here is a square planar. And the shape is also square planar.
Please write this down. Sorry. कितना स्कूल करें भाई हम? सर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां से आपने नहीं लिखा है? माय गॉड, लिखे लिखिए। प्लीज वजीहा एक बार देख लीजिए यहां तक। प्लीज सी टिल हियर। देख लिया आपने वजीहा? यस सर। हाँ, वो आप फिर खुद से लिखिए, ठीक है, तभी याद रहेगा। Also speak to yourself, talk to yourself while you are writing. Okay, oxidation state of nickel is equal to X. We took it as X, and since Cn is in the form of Cn negative, each Cn will have -1 charge. There are 4 Cn, that is like 4 into -1 is equal to -2. Then X is equal to +2, because if I put this -4 there, it will be +4. +4 minus 2 is equal to +2. Nickel generally in its elemental status, nickel 28, argon 4s to 3d8. Nickel 2 plus, it will remove 2 electrons from the 4s, we will get argon 3d8. Then general electronic configuration, you write this. Now, since you will write this, to form coordinate bond with Cn negative, nickel should have 4 vacant orbitals. That is why this will shift here. We will get 1d and 4 sps like this. Okay. Now, you will learn about this whole thing in the chapter that is known as coordination compounds. Okay, coordination compounds. Now, this is in your 12th standard, and this chapter completely you will understand why this is shifting here. Okay, one question should arise that sir, यहाँ पे तो vacant थे हमारे पास 4 ऑर्बिटल, यहाँ पे क्यों नहीं बॉन्ड बना लिया, sp3 हो जाता. Now that is because it is Cn. वही अगर Cl रहता NiCl4 2 नेगेटिव, तब यहाँ पे आपके पास क्या होता, 4sp3 बनता. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द लिगेंड बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको. अच्छा, ऑल्सो इरम, आप लेक्चर ने आपने लेक्चर देखा एक भी ऑर्गेनिक का, हमने आपसे शेयर किया था. हाँ सर, एक लेक्चर देखा बस. कुछ डाउट उसमें या फिर कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया? सर अभी एग्जाम चल रहे हैं तो उतना मैंने ध्यान नहीं दिया. अच्छा, उतना आपको ध्यान नहीं. ओके, डन सर. डन. ऑल ऑफ यू रोट दिस, यस और नो, प्लीज टेल मी. यस. ओके, राइट. नेक्स्ट. अब्दुल्ला, आप थोड़ा लेट हैं, प्लीज वॉच द प्रीवियस, है ना, जो भी पार्ट मिस हुआ है आपका, and you will understand from here. Okay. Okay. Please write the topic, bond parameters.
Okay, we have to learn three things in the bond parameter. The first thing is bond length. And what are the factors that affect the bond length? Similarly, the bond angle. And then we have the bond strength. Bond length, bond angle, and bond strength. Okay, please write the first topic, bond length. Okay, what is bond length? First of all, write the definition. The equilibrium distance between the centers of two nuclei of two bonded atoms in a molecule. Okay, so atoms are bonded, but those atoms are like a spring. ठीक है, तो दो atom के बीच में bond होता है, it's like a spring. So they are always in some little vibration. Okay, now if vibration is there, then we say that the equilibrium distance यानी कि उनका mean ले लेते हैं. We take the mean of that distance, and since they are vibrating, there will be some point जहाँ पे आपके पास एक average distance होगा दोनों के बीच में. That average distance is only known as the bond length. Okay, right, next, factors affecting the bond length. This is more important. Please write these things with me only, okay? Factors affecting bond length. Factors affecting bond length. Please write the size of atoms. Number one. Size of atoms. Now, obviously, the bond length is directly proportional to what? Size of atoms. That means if I have two very small atoms, then the distance between the nuclei of these two will be small. If I have large atoms, then you can see that the distance between the nuclei of these two is what? It is greater. It is very evident that the bond length is directly proportional to what? It is directly proportional to size of atom. So if I talk about the bond length between carbon-carbon bond, then it will be smaller than silicon-silicon that is below it, right? And it will be also lesser than germanium-germanium, which is even below silicons. Okay, so carbon-carbon bond is smallest. So if I go down the group and both the atoms are same, then it is going to be increasing as I go down. Okay, now, relatively speaking, HCl, HF in दोनों का bond जो होगा, it will only depend on what? It will only depend on the size of atoms. So size of atom, bond length is directly proportional to the size of atom. This is the first point, right? The second point, bond multiplicity. Bond multiplicity का मतलब क्या है? कितने multiple bond है हमारे पास? Okay. So if I have a single bond, it will be larger. If I had double bond, that means दो bond है, यानी कि nucleus क्या होंगे एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक होंगे. If I will have double bond, it will be more nearer. That means the bond length will decrease. If they are near, the distance between the two nuclei will decrease, and that is why they will be nearer. Triple bond होगा तो और नजदीक हो जाएंगे. Okay, so please write bond length is inversely proportional bond multiplicity. ठीक है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को इनवर्सली इतना समझ में नहीं आता. एक पॉइंट भी लिख लीजिए, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन bond multiplicity. Okay, that means we can write, if I talk about carbon-carbon single bond, then this will be larger in size. Carbon-carbon double bond will be lesser in size than carbon-carbon single.
and carbon triple bond carbon is going to be even smaller, sorry. Carbon triple bond carbon is going to be even smaller. Similarly, if I talk about nitrogen single bond is greater in size, double bond is smaller in size, triple bond is even smaller in size. Similarly, oxygen single bond is greater, oxygen double bond oxygen is smaller in size. Okay. Right, next, bond angle. This is more important, okay? Bond angle is more important, right? The second, bond angle. Now, in bond angle, the first is the steric number. It depends on what? Steric number. कैसे लिख रहे थे bond angle, size of atom? Okay. Just a second, guys. Bond length is in blue. Bond angle is also in blue. Okay, right here. Average angle between. Definition लिख लीजिए पहले. Average angle between the orbitals containing bonding electron pair around the central atom in a molecule. Just a second, guys. Just wanted to show you guys one thing. Can you guys see this? Yes or no, tell me. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, see all of these things you can see that, see scissoring में देखिए आप लोग, the bond angle is changing. Yes or no, tell me. Right? The blue atoms के बीच में देखिए bond angle change हो रहा है ना. If I go from here, ये वाला, it is changing, right? Yes or no, this angle. Can all of you see that? Yes, sir. Okay. Similarly, look here. The bond length between these two, the bond length between this yellow atom and this blue atom, it is also changing. Yes or no, tell me. Okay, so Yes. these are the
These are the vibration that happens in a molecule on its own, okay, because of the temperature that we have. Temperature की वजह से क्या होता है, atoms they vibrate. So these are the vibration available. That is why we write the equilibrium distance bond length के केस में. Angle के केस में क्या लिखते हैं, जो average angle है उसको लिखते हैं. Okay, so these are just there by definition. Okay, let's move back. Now this is for definition only. Now let us move on to the factors affecting bond angle. Please write. All of you can see the screen now with the one note. Yes or no, tell me. Factors affecting, नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? नहीं, यही तो शेयर किया हुआ है. ठीक है, factors affecting bond angle. Now I want you to tell me steric number जब 2 था, what was the angle for steric number 2? Bond angle क्या था? Please flip some pages and tell me. 2 में bond angle क्या था? When it was steric number 2, what was the bond 180. angle? 180. Very good, Devangi. When it was 3, क्या angle था bond angle? Steric number 3 में नॉर्मल केस, स्टेरिक नंबर 3, जीरो लोन पेयर केस वाला बताइएगा. जीरो लोन पेयर, टेल मी गाइस. स्टेरिक नंबर 3 120. 120. इरम एंड फहद, फहद तो नहीं है. इरम आपको नहीं मिल रहा है टेक्स्ट बुक, आपके नोटबुक में नहीं मिल रहा है इरम आपको बॉन्ड एंगल? सर मिल रहा है ना? ओके, फिर आंसर कीजिए. 4 में क्या था? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल व्हेन स्टेरिक नंबर इज 4? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल व्हेन स्टेरिक नंबर इज 4? 109.5. 109.5. कैन यू सी अ पैटर्न? क्या हो रहा है? इफ द स्टेरिक नंबर इज इंक्रीजिंग, द बॉन्ड एंगल इज Decreasing. Okay, please write the first steric number. Okay, steric number में क्या लिखेगा? You will write as the steric number increases, bond angle decreases. As the steric number increases, bond angle decreases. That means bond angle is inversely proportional to steric number. Second लिखिए, lone pair. Lone pairs. Okay, lone pairs कहाँ पे? Lone pairs on central atom. ठीक है, lone pairs on central atom. I am going to take the case of CH4, NH3 and water. ठीक है. Now what is the steric number here? सब में steric number 4 है. Yes or no, tell me guys. है ना? यहाँ पे क्या है आपके पास? 4 sigma. यहाँ पे you have 3 sigma plus 1 lone pair. Here you have 2 sigma plus 2 lone pair. All of you know this? Yes or no, please tell me guys. इरम, देवांगी, आप लोगों ने लिखा है ना? ठीक है. Steric number लिख लिया आपने. Then you are going to write the bond pair. Bond pairs कितने हैं आपके पास? You have 4, 3 and you have 2. What is the lone pair? Here you have 0 lone pair, here you have 1 lone pair, here you have 2 lone pairs, here you have 2 lone pairs. Now what is the hybridization here? Hybridization भी सबका सेम है, right? Because steric number सेम है तो hybridization क्या हो जाएगा? सबका सेम हो जाएगा. sp3 sp3 sp3. What is the angle for CH4? Angle क्या आता है CH4 में बताइए? 109.5. NH3 में बताइए. You have written this for NH3 also. What is the bond angle in NH3? Flip some pages and tell me. अरे जल्दी बोलिए. NH3 and water दोनों के लिए. 107. For NH3. Water के लिए.
इरम 104.5. इरम आपने नहीं लिखा है क्या? यस इरम, सर मैंने लिखा है। लिखा है, मिल नहीं रहा आपको? अच्छा, यहाँ पे देखिए एंगल क्या हो रहा है, एंगल इज डिक्रीजिंग एज वी आर इंक्रीजिंग द लोन पेयर एंड वी नो दैट व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स then they repel the bond pair more effectively, and if the lone pair bond pair repulsion is more, the bond pair will decrease the angle between them. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, you have an atom, यहाँ पे इसके पास चारों के चारों क्या थे, they were bond pairs, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन, इन दोनों के बीच में, सबके बीच में रिपल्शन क्या था, it was same. But if I will add a lone pair here, then this will repel more, तो ये इस तरफ उसको पुल पुश करेगा, राइट, दिस विल पुश दिस वन आल्सो, दिस विल पुश दिस वन आल्सो, ठीक है, 3D है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, दिस थीटा विल decrease. So if I am going to increase the number of lone pairs, it will exert more repulsion on the bond pairs, which will distort the structure and the bond angle will decrease. Okay, and the bond angle will decrease. So we can write, but please remember all of you, हम लोग सबसे पहले स्टेरिक नंबर को देखेंगे, ठीक है ना, चाहे आपके पास स्टेरिक नंबर को देखेंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सेम है, then we are going to look at the lone pair electrons. Okay, this is the first step, steric number then lone pair electrons. Okay, so what we can see, bond angle is what, inversely proportional to the number of lone pairs, is inversely proportional to number of lone pairs. Please remember यहाँ पे, when the steric number is same, ठीक है, steric number same रहना चाहिए तभी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. All of you wrote this, yes or no, please tell me guys. All of you wrote this? Yes, sir. Okay, right, next. Write a question. Compare the bond angle. Bond angle of NH3, NH4 positive, NH2 negative. ठीक है, यहाँ पे देखिए, in all of these cases, इनको नाम दे देते हैं A, B, C. I hope all of you can see that what is the number of bond pair electrons here, है ना, यहाँ पे bond pair electrons कितने हो जाएंगे, please see, 3 bond pair तो होंगे ही होंगे, right, the sigma bond will be at least 3 because there are 3 hydrogens, यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे it will be only 2. Now, when you have to write the lone pair electrons, if you know the number of bonds, then it is very easy to write the number of lone pair electrons. ठीक है, कैसे easy है, नाइट्रोजन के पास कितना होता है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, it is always 5. Out of 5, it has used how many? Tell me, guys. How many 3. has it used? 3. कितना बच गया? 2. 2. कितना पेयर बचा बताइए? How many pairs? If you have 2, then how many pair? 1. 1. 1. Very good. 1 pair. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, प्लीज टेल मी गाइस, टेल मी. Positive charge. पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, यस और नो, Yes. ऑल ऑफ यू कैन सी दैट. ओके, एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, कितना यूज किया 4 में से इसने, 4. 4, तो कितने हो जाएंगे, कितने बचेंगे इसके पास लोन पेयर, 0. 0. ठीक है, अब NH नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इट विल नॉट हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 6, 6. बिकॉज एक, हाँ ठीक है, कितना यूज किया इन्होंने, 6 में से कितना यूज किया, 2. 2 यूज कर लिया इन्होंने, तो कितना बच गया, 2 lone pair. 2 लोन पेयर्स बच गए. देवांगी एंड नीरम, आपको समझ में आया कैसे निकालेंगे? Yes, sir. व्हाट अबाउट यू अब्दुल्ला? यस सर. ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए, अगर सबका सेम है तब हम लोग लोन पेयर पे जाएंगे. सबसे पहले स्टेरिक नंबर बताइए, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 2 + 2 4. ऑल ऑफ यू गॉट दिस, प्लीज टेल मी गाइस. ठीक है, ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर क्या है, सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था. नाउ द स्टेरिक नंबर इज सेम, देन वी विल मूव ऑन टू द लोन पेयर. नाउ टेल मी व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट लोन पेयर, लोन पेयर का ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा किसके पास है, NH -2.
हाँ सी के पास, ए बी सी है ना, सी के पास सबसे ज्यादा है, उसके बाद ए उसके बाद बी बी। ठीक है। अच्छा अब हम बॉन्ड एंगल के बारे में लिखेंगे। बताइए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बस सेम ऑर्डर लिखेंगे, साइन चेंज कर देना है, सी ए बी। बात आ गई समझ में? ईसन ऑफिशियल में गाइस, सबसे पहले देखिए आप लोग क्राइटेरिया के बारे में आप लोग ना ये लिख लीजिएगा, ऑर्डर क्राइटेरिया का। हम लोग किसके क्राइटेरिया पे डिसाइड कर रहे हैं, लोन पेयर के क्राइटेरिया पे डिसाइड कर रहे हैं। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट द ऑर्डर ऑफ लोन पेयर। देन वी विल आस्क आवरसेल्फ, इज लोन पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन द ऑर्डर विल बी सेम, चेंज द साइन, साइन चेंज कर दीजिए बस है ना। अगर बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर तब सब कुछ सेम रहेगा, साइन भी सेम रहेगा, ऑर्डर भी सेम रहेगा। ओके, राइट दिस डाउन गाइस, विल डू वन मोर। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? डन सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। Look at this example of, we have carbon dioxide and we have CO3 2 negative. Okay, CO3 2 negative. Now please remember here, when I am going to write the bond pairs, प्लीज रिमेंबर हाउ मेनी, यू कैन सी टू सराउंडिंग एटम्स, तो आपने दो लिख दिया, लेकिन याद रखिए ऑक्सीजन इज गोइंग टू हैव अ डबल बॉन्ड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मींस इट इज यूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज यूजिंग ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर आपके पास सिग्मा कितने हैं, दो हैं, एंड बॉन्ड पेयर ऑफ पाई इज हाउ मच, टू। तो टोटल मिला के आपके पास चार बॉन्ड पेयर, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन सिग्मा बिकॉज सिग्मा हमको स्टेरिक नंबर निकालने में काम देगा। ओके, सिमिलरली हियर आई एम गोइंग टू राइट, देयर विल बी थ्री सिग्मा बॉन्ड्स। All of you got this? Yes or no? Tell me these two things for sigma. Yes or no? Tell me. सिग्मा तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दो सिग्मा तो होगा ही, क्योंकि दो बॉन्ड आपके पास, दो सराउंडिंग एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा कैसे सिग्मा बॉन्ड अगर नहीं रहेगा तो। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस और नो? प्लीज टेल मी। यस सर। यस, ओके, नाउ लेट्स लुक एट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। नाउ यहाँ पे आपके पास इंटू टू कर दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, डाईवैलेंट है, इट इज गोइंग टू यूज, इट इज गोइंग टू हैव डबल बॉन्ड। तो आपके पास फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास, अभी कितने बच गए, जीरो बच गए, बिकॉज इट इज यूजिंग ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। इन दिस केस कार्बन के पास कितना होगा बताइए जरा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के पास, टू नेगेटिव चार्ज है तो 6 सिक्स होंगे। अच्छा, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है ना, तीन ऑक्सीजन है, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा वो, सिक्स इलेक्ट्रॉन टोटल के टोटल यूज कर लेगा, दैट इज व्हाई हियर द लोन पेयर इज गोइंग टू बी जीरो। कैन ऑल ऑफ यू सी दिस? यस और नो? टेल मी गाइस। यस सर। यस, ओके, दैट इज व्हाई द स्टेरिक नंबर हियर is equal to what, 2, the steric number here it is equal to what, 3। बताइए डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या होगा, स्टेरिक नंबर या लोन पेयर, व्हाट इज गोइंग टू बी योर सॉरी, क्या बोल रहे थे हम, व्हाट इज गोइंग टू बी योर डिसाइडिंग क्राइटेरिया, हाँ, व्हाट इज गोइंग टू बी योर डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर बॉन्ड एंगल, टेल मी, स्टेरिक नंबर या फिर लोन पेयर? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, तो आप स्टेरिक नंबर का ऑर्डर लिखिए, स्टेरिक नंबर, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, किसका ज्यादा है, बी इज ग्रेटर देन ए,
Correct, guys? Yes or no? Please tell me. Yes or no? Okay. And steric number is inversely proportional or directly proportional? Bond angle के bond angle is steric directly या inversely? Inversely. Inversely. तो फिर bond angle का order क्या हो जाएगा? Same, बस sign reverse. बात आ गई समझ में? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Please note this down. Then we are going to look at the electronegativity. कैसे affect करता है? Okay. Written. Okay. Right, next, electronegativity. How are we writing this part? In blue. एक पहले हम एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोग को, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. ओके, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. We have a case of NH3, ठीक है, and we have another case of NF3. ओके, एक बात बताइए, हम एंगल आपको बता रहे हैं, ठीक है. Tell me something. Distance between these two points is greater या these two, किस में ज्यादा है? ब्लू में ज्यादा डिस्टेंस या रेड में ज्यादा डिस्टेंस है? टेल मी गाइस, डिस्टेंस कहाँ पे ज्यादा है, ब्लू में या रेड में? Red. रेड में डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है. लेट अस सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. अब बताइए, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को ब्लू की जगह में रखेंगे, देन इट विल बी गिविंग मी मोर रिपल्शन. ए में ज्यादा रिपल्शन होगा या बी में ज्यादा रिपल्शन होगा? कहाँ पे रिपल्शन ज्यादा? ए में रिपल्शन ज्यादा होगा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. यस और नो? यस वजीहा? Yes, sir. Yes, na? All of you understood. Iram, what about you? Abdullah, what about you? Yes, sir. Okay. Now, tell me, between nitrogen and hydrogen, which is more electronegative, nitrogen or hydrogen? Nitrogen. Nitrogen. तो हम ये बोल सकते हैं electrons are more towards nitrogen. Yes or no? Tell me. Yes. What about others? Devangi, Iram, please tell me yes or no. Understood Yes. this? Yes, sir. Which is more electronegative in nitrogen and fluorine? Fluorine. 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 So I can say the electrons are somewhat here, more near fluorine. Yes or no? Tell me. Yes, sir. कहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा बताइए? नाइट NH3 या NF3, A या B? Where will you see more repulsion? Tell me guys. A. All of you B. can see that. वही B. B में तो दूर दूर है ना इलेक्ट्रॉन, देखिए, है ना? तो रिपल्शन कम होगा उनमें ना. Yes, sir. ठीक है. Iram and Abdullah understood this? Yes or no? Please tell me. Yes. ठीक है. So A will be having
more repulsion. A will be having more repulsion. यहाँ पे V में क्या होगा, repulsion कम होगा. Deciding criteria क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, सराउंडिंग एटम. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम की बेसिस पे. ठीक है, आपने इस बात को समझ लिया. अब हम लोग इसको अच्छे से इसको लिखते हैं. ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को. अब इसको लिख लेते हैं अच्छे से. प्लीज सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट करते हैं किससे, काई से. इसको क्या बोलते हैं, ये एक्स नहीं है, ग्रीक या लैटिन लेटर होगा काई. इसको क्या बोलते हैं, CHI से लिखते हैं इसको, लेकिन बोला जाता है क्या, काई बोला जाता है. ओके, नाउ प्लीज राइट. If you are looking at electronegativity, then there will be two cases. One case will be central atom is different. Central atom is different, but surrounding atom is same. Okay, then in this case, bond angle will be directly proportional to the electronegativity of the central atom. है ना, आपने देखा कि अगर NH3 में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन उसके ज्यादा नजदीक थे, तो ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा हो जाएगा. यस और नो, टेल मी गाइस. NH3 का ज्यादा था बिकॉज सराउंडिंग एटम का बॉन्ड, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, ज्यादा था. ओके, नाउ राइट द नेक्स्ट केस. सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट, but central atom is same. Surrounding atom is different, but central atom is same. In this case, the bond angle will depend on, देखिए जो चीज सेम रहता है उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा कभी भी, है ना. जो चीज डिफरेंट रहती है उसी पे डिपेंड करेगी. और हमने देखा था कि जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, देन इट वाज व्हाट, इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सराउंडिंग एटम आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड एंगल क्या था, बॉन्ड एंगल आपके पास वहां पे कम था, रिपल्शन कम था, इस वजह से बॉन्ड एंगल कम था. So it is what? It is inversely proportional to the electronegativity of surrounding atom. ठीक है, so please write this down. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, पहला एग्जांपल तो वही लिखेंगे हम लोग. Compare bond angle of NH3 and NF3. ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको क्या देखना है, बताइए यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट है. सराउंडिंग एटम डिफरेंट है या सिर्फ सेंट्रल एटम डिफरेंट है? व्हाट इज डिफरेंट, टेल मी. व्हाट इज डिफरेंट? सराउंडिंग एटम इज, सराउंडिंग एटम इज डिफरेंट. तो फिर क्या लिखेंगे, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम. यहाँ पे डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या होगा, बिकॉज देखिए आप ध्यान रखिएगा, अगर इसका हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर लिखें, इसका हम लोन पेयर लिखें, इसका हम स्टेरिक नंबर लिख देते हैं. ठीक है, बॉन्ड पेयर कितना है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लोन पेयर 1 है, इसमें भी 1 है, स्टेरिक नंबर इसमें भी 4, इसमें भी 4. वट एवर क्राइटेरिया वी हैव लर्नड बिफोर हैंड, सारे के सारे अभी तक सेम है. अब डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या होगा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट. सो आई कैन राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्राइटेरिया में. अब बताइए, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन. यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. करेक्ट है. Yes, sir. एंड वी आल्सो नो दैट बॉन्ड एंगल इज व्हाट, सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. And hence, if it is inversely proportional, then I can write bond angle is what, bond angle में क्या होगा, फ्लोरीन है आपके पास B में, it will be less than
ठीक है, बात आ गई समझ में? एस एंड पी गाइस? Yes. प्लीज नोट दिस डाउन. Done, sir. Write another question. Let's compare for PS3 and NS3. यहाँ पे बताइए, अगर आप देखिएगा बॉन्ड पेयर देख लीजिए, आप लोन पेयर देख लीजिए, आप स्टेरिक नंबर देख लीजिए, दोनों में सेम होगा, दोनों बिल्कुल एक ग्रुप के एलिमेंट्स है. ओके, सो दिस विल बी व्हाट 3 3 1 1 4 एंड 4. अब बचा यहाँ पे बताइए क्या डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम या सेंट्रल एटम? व्हाट इज डिफरेंट? Central atom. atom. ओके, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम में अगर हम देखें, इसको हम ए दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं. बताइए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसके सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए या बी? Electronegativity of which central atom is more, phosphorus or nitrogen? Nitrogen. Nitrogen, yeah. So it is what? B is greater than A. And we know that the bond angle is directly proportional to the electronegativity of central atom, right? So what we can write about the bond angle? Bond angle is equal to same order होगा क्योंकि directly proportional है. B will be greater than A. बात आ गई समझ में? ये सुनो प्लीज मी गाइस. Yes, sir. Okay, right, next. लिख लिखिए इसको लिखिए. Done guys, ये सुनो प्लीज मी. Yes. Okay. Now let us write the conclusion. Please write. Conclusion. Okay. Now in conclusion, if we want to compare the bond angle, okay, so in this case, the first step is, step 1 is to calculate the steric number. Okay, what you are going to do, you are going to calculate the steric number. Then you are going to see whether it is different or same. Okay, whether it is different or same. So see, if it is different, then tell me bond angle is directly proportional या inversely proportional to steric number? बताइए. Inversely proportional. ठीक है, it is what? Inversely proportional to the steric number. अगर steric number हम लोग का क्या आ गया? Same आ गया. Then what you have to see? You have to see the lone pair. You have to look at the lone pairs.
ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में हमारे पास कितने लोन पेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज, सेम आ गया है, अगर डिफरेंट आ गया तो अगर डिफरेंट आया then tell me bond angle is directly proportional या inversely proportional to the number of lone pairs in central atom? Tell me. Inverse. Very good. Bond angle is inversely proportional to the number of lone pairs on central atom. Now if even this is same, then we will look at the next criteria. The next criteria is what? It is electronegativity. Now the electronegativity will depend whether we have the electronegativity of what, whether we have the electronegativity of the central atom or the surrounding atom, ठीक है, central atom or the surrounding atom. So please write if it is what, if central atom is different. सेंट्रल एटम आपके पास क्या है, अगर अलग है, ठीक है, देन वी नो दैट बॉन्ड एंगल इज, बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर यहाँ पे सराउंडिंग एटम अगर डिफरेंट है, then in this case the bond angle is what, inversely proportional या directly proportional, बताइए सेंट्रल एटम में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेल मी गाइस. Directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ surrounding atom. Please let me know if you're done writing this. Done. Now write next bond energy. You will also find this topic under the name of bond dissociation. Energy. Also it is known as bond enthalpy. Okay, and first of all it gives an idea about
the bond strength. Okay, it gives an idea about the bond strength. Now write what is bond energy, bond enthalpy, सारी चीजें क्या होती है? Please write. Amount of energy required to break one mole of bonds of a particular kind between atoms in gaseous state is known as bond dissociation energy, BDE. ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हमको बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रांग है, राइट, द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, वी कैन गेट एन आइडिया दैट द bond is stronger. Okay, so bond strength is directly proportional to the bond dissociation energy. Now write factors affecting bond dissociation energy. Number 1, size of bonded atoms. अब एक बात बताइए, it's kind of, it's not very intuitive, ठीक है, it's kind of non-intuitive, इस वजह से हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं. You have a stick which is of length this, ठीक है, and then you have a stick which is of length this. Both have the same thickness. किसको तोड़ना ज्यादा आसान होगा बताइए, A या B? A. B. B. क्या वजीहा, कहाँ से आई हैं आप, एक को तोड़ पाइएगा? अच्छा नहीं हाँ? सर, मैंने क्वेश्चन उल्टा सुन लिया है। अच्छा ठीक है, आपने ये समझ लिया, लंबा वाला आसानी से टूट जाएगा, राइट? हाँ हाँ। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है. बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? जब दो बड़े बड़े एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे, राइट? सो फॉर साइज ऑफ एटम्स व्हाट वी कैन राइट bond energy, bond association enthalpy और energy is what? It is inversely proportional to size. ठीक है, जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतनी आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा आसानी से, यानी कि एनर्जी कम लगेगी. ठीक है, तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी. राइट, नेक्स्ट इसी में लिख लीजिए आप लोग, as the size of bonded atoms increase, you can write bond dissociation energy decreases. ठीक है, सेकेंड सेकेंड लिखिए बॉन्ड लेंथ. ठीक है, बॉन्ड लेंथ. यहाँ पे बोलेगा सर एक ही बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, बॉन्ड लेंथ जो है ये डिपेंड करेगा आपके पास बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के ऊपर भी. ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट? इट विल डिपेंड आल्सो ऑन दी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. सो प्लीज राइट यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी, bond dissociation energy is what? It is inversely proportional to the bond length. है ना?
बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, एक बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, दो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, या फिर तीन बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। ऑब्वियसली एक को क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे कम एनर्जी कहाँ पे रिलीज होगी, एक को तोड़ने में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज ट्रिपल, देन वी हैव द डबल बॉन्ड विच इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। जितने ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, राइट। कंपेयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस किस का, ए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे बताइए क्या अलग है, यहाँ पे साइज ऑफ एटम सेम है सबका, यस और नो प्लीज टेल मी। यस सर। साइज ऑफ एटम सबका सेम है। बॉन्ड लेंथ पे भी बोल सकते हैं, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की भी बोल सकते हैं। अगर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के लिए देखें, जिसके लिए जो भी क्राइटेरिया आप ले रहे हैं ना, उसका ऑर्डर सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है। सो द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा किसका है, सी का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का, ठीक है। क्राइटेरिया सबसे पहले, उसके बाद हम क्या रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं इससे। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यूजिंग दिस बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्राइटेरिया। अब उसके बाद देखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मल्टीप्लिसिटी में क्या रिलेशन है। सो वी नो दैट bond dissociation energy is directly proportional to, it is directly proportional to bond multiplicity, यानी कि bond dissociation energy C का सबसे ज्यादा, उसके बाद B का, उसके बाद A का। बात समझ में आ गई सबको, ये सुनो प्लीज में गई, यस। ठीक है। सिमिलरली देखिए B, I have atoms such as HF, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का A, HF है आपके, कंपेयर करना HF, B है आपके पास HCl, C है आपके पास HBr एंड D है आपके पास HI। सारे एटम्स अलग अलग हैं, ये सब प्लीज टेल मी गाइस, हाइड्रोजन के अलावा ऑल आर डिफरेंट, ये सब प्लीज टेल मी। यस सर। बताइए साइज बताइए फिर सबका, है ना। अगर एटम्स अलग है तो साइज भी अलग होगा। टेल मी विच इज स्मॉलेस्ट या फिर विच इज लार्जेस्ट, जैसे भी स्टार्ट करना चाहते हैं आप। स्मॉलेस्ट कौन सा है यहाँ पे, विच इज स्मॉलेस्ट हियर। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में कौन स्मॉलेस्ट है, प्लीज यहीं पे देखिए ना अभी को, कौन सा है फिर से बोलिएगा जरा, सबके नाम एक जैसे सुनाई देते हैं। टेल मी वंस अगेन, कुड नॉट हियर यू। फ्लोरीन, फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट, देन क्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखिए बताइए कॉपी में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा इट विल बी सेम लाइक दिस, लेकिन क्या होगा, उल्टा लिखेंगे, है ना। बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी के लिए ए है, साइन उल्टा कर दिया, बी, फिर सी, फिर डी, बिकॉज इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑल ऑफ यू गॉट दिस, yes or no, please tell me guys. यस सर। Yes, चलिए, that's it for today. You will get some assignment इसके बारे में, bond parameters के बारे में, okay, and then we will move on to the next topic. Okay guys, चलिए, thank you very much. Next topic होगा आपका molecular orbital theory. Okay, you'll understand the molecular orbital theory and then it will take a bit of time. molecular orbital theory भी 2 क्लास को लगेगी आपको, और ठीक है molecular orbital theory में। ओके चलिए, इरम आपके एग्जाम कब तक है, क्या कहा था आपने, भूल गया। सॉरी कब सर। तक है एग्जाम, कब तक है आपका, 15th। 3 तक है, अच्छा ठीक है। तब
आफ्टर दैट यू, अच्छा ऑर्गेनिक भी आ रहा है क्या आपके एग्जाम में? नहीं नहीं। ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है, ओके। फिर कुछ छुट्टी तो नहीं मिलेगी आपको, आप बता रही थी, क्योंकि ओके। बट आप ना अच्छा एक बात बताइए, देवांगी आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? देवांगी, सर यही वाला। केमिकल बॉन्डिंग, यस ओके। सर। Waziha, in your school, which chapter is going on? 4 chapters are completed. We are doing revisions for. Yes. अच्छा रिवीजन चल रहा है। आप टीचर से पूछिएगा कि अगला क्या पढ़ाएंगे वो, Okay sir. ठीक है, वो पूछ लीजिएगा। Okay. वो अब्दुल्ला आपके स्कूल में क्या चल रहा है? सर अभी तो टेस्ट चल रही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्या बोला आपने? एग्जाम चल रही है। एग्जाम चल रहे हैं अभी, अच्छा। और लास्ट चैप्टर क्या पढ़ाया था आपके स्कूल में? चैप्टर 5 है। चैप्टर 5, चैप्टर 5? हाँ। नहीं नहीं, एनसीईआरटी नाम बताइए, चैप्टर का नाम बताइए। चैप्टर 5 है ही नहीं सिलेबस में। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स। कार्बन कार्बन था उसमें, क्या था? चैप्टर का नाम ही नहीं पता, चैप्टर 5। इरम आपके यहाँ बस ऑर्गेनिक चल रहा है ना, ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है। हाँ सर नहीं, अब्दुल्ला बताइए। ऑर्गेनिक खत्म हो गया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अब्दुल्ला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यस सर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दिस इज द 4th चैप्टर ना, ये चैप्टर चल रहा है आपका अभी, लास्ट यही चैप्टर खत्म हुआ है, राइट? हाँ हाँ। इसके बाद कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं। करेक्ट? अच्छा यस सर। ठीक है, ओके ओके फाइन। नहीं नहीं, हम इरम ये बोल रहे थे कि केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपके स्कूल ने ये स्टार्ट कराया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ सर, वो खत्म हो गया, अभी इक्विलिब्रियम चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो ऑर्गेनिक को अभी अभी के लिए स्किप किया जा सकता है ना? इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किया जा सकता है, राइट? हाँ सर। बिकॉज, है ना? लेकिन रिकॉर्डिंग से आप देखते रहिएगा, संडे के दिन डाउट्स होगा तो बताइएगा, संडे के दिन हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे आपके साथ, और यूनिट टेस्ट वगैरह होगा तो उसमें आपको मदद हो जाएगी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, ओके? ओके रम, ओके सर। ओके चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड या मोहम्मद तारिक, यू जस्ट प्ले, ओके? ऑल ऑफ यू कैन लीव, बाय गाइस, थैंक यू, Thank you sir. थैंक यू, बाय बाय। हाँ मोहम्मद तारिक बताइए, डू यू हैव डाउट्स? Yes, sir. बताइए Yes, कहाँ पे sir. डाउट आया? Sir, when you thought about that percentage and all, I have that doubt, sir. One minute, sir. Send it to you. You're sending something to me? No, sir. That's you said to send a screenshot, right? हाँ हाँ, तो आप Yes, sir. भेज That रहे हैं percentage, that one you thought, that above one. above 1%? One यहाँ minute, तो sir. परसेंट नहीं, यहाँ नहीं है ना। 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, कौन सा देख रहे थे आप? Fourth one, sir. That when you're thinking about that H2 and all. परसेंटेज की जब बात कर रहे थे हम, परसेंटेज तो एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे हम ये बोल रहे थे क्या, लाइक No, ऑल sir. ऑफ यू, That one above that. यहाँ पे Yes, ये, sir. That this one, this one. Yes, sir. This I have to. ओह अच्छा, यहाँ पे देखिए हम ये बता रहे थे, इससे पहले ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, दैट यू शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑर्बिटल दे ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म अ बॉन्ड। ऑर्बिटल्स पता है आपको? पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, है ना? पता है नहीं पता है? माइक ऑन रखिए तारीफ आप, Yes, sir. That, yes. ओके वेट अ सेकंड।
Now वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बॉन्ड बनाने के लिए, वो बोलती है कि जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, राइट, and there is overlapping between two orbitals, then the bond is formed. ये एक एटम A है, ये दूसरा एटम B है, इन दोनों के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है? ओके तारीफ? Yes, sir. अच्छा, ओके। I want to form a bond with hydrogen and oxygen because we are forming water molecule. Okay. Now, एक और चीज which is very logical, I would hope you will say that there are two types of electrons. If I will look at oxygen atom, we have one shell and we have the another shell. In the first shell we have 2 electrons, in the another shell we have 1 2 3 4 5 6 electrons. Obviously the inner shell electrons, it will not in the contact with the surrounding atom जो भी उसके साथ attach होगा. Okay. Yes, sir. That means only the valence electron forms bond. Okay. Yes, sir. This thing is also clear. Okay, fine. Yes, sir. Then we looked at the valence electron. देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, 1s2 2s2 2p4. This was the electronic configuration, and we focused on the valence electron because these are only going to form the bond. And now we can see that oxygen is connected to what? 2 hydrogens, right? Go ahead. Yes, sir. That means it needs 2 unpaired electrons. Also you know na that Yes, if sir. we are forming a covalent bond, एक electron आएगा, we will come with own electron and they will form a bond. So that means A should have 1 electron and B should have 1 electron and they will come together and form a bond. Correct? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And you can see that this oxygen, it is also having the 2 unpaired electrons. Correct? Yes, sir. Okay. Now this is Py and this is in the Pz. Correct? Yes, sir. And then I have made C. This is red one. This red one is your Pz. Okay. And this Sir. is your Py. And hydrogen has attached. Hydrogen में कौन सा shell होता है? 1s1 होता है. One is So hydrogen 1s1. again, Yes, sir. right? Yes, sir. And if 1 electron from 1s1 and the 1 electron from P, they both came and they made a bond. Can you see the bond? Yes or no? Yes, Tell sir. me. Okay. Also, if I want to draw the structure, then Y and Z axes, these are what? Oxygen atom, this is the Z axis में जो orbital है. This is the axis on the Y orb. Correct? Yes or no? Tell me. Yes, sir. And this here we are having 1 hydrogen and here we are having 1 hydrogen. So this is the theoretical, right? Valence bond theory के according, this should be the structure of oxygen atom. Correct? Yes, sir. And the angle between these will be what? 90 degree, because this is the Z axis, this is the Y axis. Correct? Yes, sir. Okay. So theoretically, how much angle do we need? 90. But experimentally, how much we got? 104.5. That means something is missing. Correct? Theory is not matching with experimental. Then came the idea of hybridization. They said that, see, we are having these 4 orbitals. If we are going to mix the 4 orbitals and then we are going to form a different type of orbital, then the hybridization का concept आया. आपने ये देखा फिर? Did you watch this lecture, this part? Yes, sir. Yes, This I sorry. watched. This you watched, na? After this you understood? Yes, sir. This I understood. That other one I didn't understand. Achha. All of these ones you Yes, sir. understood after this? Sir, I have a doubt in that enthalpy, ionization enthalpy. Can you explain that, sir? Ionization enthalpy. Okay, fine. First of all, see, the definition of ionization enthalpy, it says that the amount of energy that is required to remove 1 electron from neutral isolated gaseous atom. It should be neutral, it should be isolated, that it should not be near any other atom. It should be gaseous and it should be what? Atom. Neutral isolated gaseous atom. ठीक है, इसको मत ध्यान दीजिए. ठीक है, this is for just the definition. This is just for the definition. But what is ionization energy? It is the energy that is required to remove 1 electron. Okay, how many electron? Tell me. Sir, How many electron?
It is the energy required to remove And how many electron? One loosely electron. bond. Right? Yes, sir. Now the least amount of energy that we require is from the loosely bond, right? Loosely. Because if I Yes, sir. have a atom and it is like here we have two electrons and here we have one electron, then obviously this is the first shell, this is the second shell. The electron in the second shell, it is easier to remove, right? Yes, This sir. is the most loosely bond. Why it is most Loosely. loosely bond? Because it is far away from the nucleus. And if it is far away from the nucleus, the positive charge of the nucleus is not able to attract the electron as effectively as the first shell electron. That is why it is loosely bond. Got it? Yes, sir. Now, what you did not understand here, I think you must be having some question. जो आप try कर रहे थे नहीं बना आपसे. Yes, sir. Then that Tell question, me sir. what? You just send me that question. That will be more helpful, no? Because Yes, I mean, sir. No, sir. I checked that question. No, I had only doubt in that theory part. Now I am clear, sir. now you're clear. Okay, fine then. Anything else? Sir, Tell and me. one more, sir. That can you just give a बताइए. short definition for the atomic radius? That is, then I'll be clear with all doubts. Oh, देखिए, atomic radius is a tricky thing. Atomic radius, ना? Yes, sir. I have given you a playlist, right? Yes, sir. ठीक है. उसमें ना देखिए atomic radius उसमें 2-3 चीजें आती हैं. इस वजह से ना what you should do, you should watch that part of the lecture. Okay. See, atomic radius, it is a simple definition. क्या है कि दो atom के बीच में, suppose we have atom A and we have atom B. ठीक है. इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, that is the atomic radius, the half of this distance. Okay. 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 Generally, so atomic radius is like if you have one atom, इसका nucleus है, and the distance between the nucleus and the outermost electron, that is the atomic radius. That is the definition part. Okay, that is the definition part. But measure करने के लिए आपको एक atom मिलेगा ही नहीं. For example, आपको hydrogen का एक atom कभी नहीं मिलेगा. You will always get hydrogen gas. You will never get chlorine in its isolate from chlorine. You will just get Cl2. Okay, you will never get carbon. You will always get carbon in the form of graphite or diamond. But diamond तो बहुत महंगा है ना? Carbon in the form of graphite. Okay, you will always get, let us suppose something else, sodium. You will get sodium, but not one atom. You will get sodium solid. That is the metal. जिसमें बहुत सारे atoms. Correct? Yes, sir. We can see that there are